Hello, 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 and a very warm welcome to all our viewers of CricketNext. एक और दिन, एक और मैच, and after a week-long break, India is back on the field. India will be playing uh, their match against England in Lucknow in the Ekarna Stadium. और इसी मैच पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं के श्रीनिवास राव, ताउस रिजवी और रंजीत मिश्रा. Hi, Ranjit. Hi, Taus. Hi, Srinivas. England has won the toss. They have opted to field first. India पहली बार बैटिंग कर रही है. They will put up a target instead of chasing down one. Or this is something that the fans wanted. And we'll start with Srinivas Rao, sir. इंडिया बैटिंग फर्स्ट. बहुत टाइम से ये वेट था कि इंडिया कब टारगेट डालेगी बोर्ड पे और इंस्टेड ऑफ चेजिंग. हाउ डू यू सी दिस डिसीजन ऑफ इंग्लैंड? This is what fans wanted का तो पता नहीं है, but this is definitely what should have happened. So I'm glad this is happening because this side, I'm just looking at the other sides which are like kind of right now busy peaking in the tournament, and vis-a-vis that, I'm looking at India. And then there are those usual questions which I'm sure is in everybody's mind. मेरी दिमाग में नहीं, ताऊ साहब, रंजीत, हम सब यही सोच रहे होंगे, have we peaked a little too early? So it's like, we need to keep patting ourselves on the back. We need to keep reminding ourselves, nahi nahi sab theek hai, all is well type. तो उस चक्कर में मैं कहूंगा कि अगर आप उस हिसाब से इसको सोचे तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, नॉट बिकॉज इट इज it's a, I don't know what kind of a role do you want to play in Lucknow, what are the weather conditions, and I haven't read much. But that said, I just want to see what kind of an appetite this team has to put up a target on board. Can you do a 350 plus? Given a chance, Australia is back to doing that. Given a chance, South Africa is doing it. Can you match up to it? Can you match up to that kind of a batting arsenal? So that's something. We by the way, हमने अभी तक कितने मैच हुए इंडिया के? 5 मैच हुए हैं. 5 मैच में I would like to believe that we have taken 43, 44 wickets out of the 50 wickets, potential 50 wickets, right? Which shows that our bowling is in good stead. Yeah. Now we want to see where our batting takes us and what kind of confidence we can get. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ताउस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इंडिया विल बी पुटिंग अप अ टारगेट और सेम टीम है. अगर हम बता दें, इंडिया इज प्लेइंग द सेम टीम एज द वन दैट दे प्लेड इन द लास्ट मैच. और काफी स्पेकुलेशन थी कि लखनऊ की पिच है, थोड़ी स्लो है, इट इज एन ऑलरेडी यूज्ड विकेट. तो शायद अश्विन को आप देख सकते हैं, साहिल मल्होत्रा जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी ये बता रहे थे कि अश्विन भी पिच को ध्यान से देख रहे हैं जडेजा के. बट देयर इज नो चेंज, अश्विन इज नॉट इन द 11. ताउस, what do you have to say about the team combination? Are you okay with the fact that India is going with the same team as the previous game, or did you expect some changes? नहीं, अभी मैंने देखा रेड सॉइल जो हमारे डिस्प्ले पे है, रेड सॉइल. तो रेड सॉइल के लिए परफेक्ट यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपने डाला है जो आपने पिछला खेला था, क्योंकि रेड सॉइल हम और मैं और शेनी भाई देखते हुए आ रहे हैं. रेड सॉइल मुंबई में क्या करता है, फास्ट बॉलर को असिस्ट करता है, स्पिनर्स को अच्छा बाउंस देता है, बैटर्स को अच्छा मौका देता है. तो दैट इज समथिंग वेरी 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 गुड अबाउट दिस डिसीजन, आई बिलीव. ऐसा मुझे लगता है. ब्लैक होती तो शायद वो अश्विन की तरफ जाते, ज्यादा से ज्यादा स्पिन हैवी अटैक होता. मगर जब रेड सॉइल की बात आ जाती है ना, विच इज आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि रेड सॉइल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा एड करता है बाकी तीनों डिपार्टमेंट को एक्चुअली. बट देन व्हेन इट कम्स टू श्रीनी भाई सेइंग व्हाटएवर ही सेड, आई एग्जैक्टली सपोर्ट हिम, सेकेंड हिम फॉर व्हाटएवर ही सेड. यहाँ पर हमने अभी तक अर्ली पीक तो हुआ ही है. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा दिल धीरे धीरे वो हो रहा है कि अर्ली पीक हो गया हमारा. हम टेस्ट नहीं हुए हैं, हमको चैलेंज नहीं मिला है एग्जैक्टली. और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्या हम सिर्फ चेस कर सकते हैं? क्या हम 300, 350 जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी अदर डे पुट अप किया, या साउथ अफ्रीका कंसिस्टेंटली करती आ रही है, क्या हम वो कर सकते हैं? या अगर चेस की बात आए, क्या हम 300, 350 के ऊपर चेस कर सकते हैं? वो हिसाब से टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक. एंड राइट नाउ इंग्लैंड इज लाइक दैट वुंडेड लायन, और हम वो टाइगर है जो इस वक्त ऑन द प्रॉल एक के बाद एक हंट करते आ रहे हैं, शिकार सक्सेसफुल शिकार करते हुए आ रहे हैं. तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट है दोनों के बीच में, वुंडेड लायन एंड अ टाइगर विच इज इन फॉर्म राइट नाउ. कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे? मुझे आई डोंट माइंड एक दो झटका जिसमें कि हमारी थोड़ा एक टेस्ट हो कंडीशन, हमारी थोड़ा आंखें खुले, कोई भी सिचुएशन पता चले एग्जैक्टली हम कहाँ लैग कर रहे हैं. आई डोंट माइंड एक दो झटका, बट देन दिस इज एन इम्पोर्टेंट गेम फॉर इंग्लैंड. और
I think it's a good decision to bat on right now. Rohit Sharma, perfect. He knows exactly how red soil behaves. So this is the perfect time for him to capitalize on what he did the other day, half centuries के ऊपर. उसके बाद now he can go into the 3-figure mark. Normally Lucknow wickets are slow wickets, but this could be different. Could be different. I'm not saying होगा क्योंकि मतलब नेचर एक तो विकेट का है, बट देन रेड सॉइल ऐड किया आपने तो कुछ अलग हो सकता है. बिल्कुल 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 रंजीत, द प्लेइंग 11 दैट इंडिया हैज, अभी ग्राफिक प्लेइंग 11 का आएगा स्क्रीन पे, आप देखेंगे. हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग 11? हार्दिक पांड्या अगेन अ बिग बिग मिस, क्योंकि वो ऐसा बैलेंस देते हैं टीम को कि आपको उनको रिप्लेस करने के लिए आपको दो प्लेयर्स खिलाने पड़ रहे हैं. तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग 11? डू यू थिंक इट इज अ परफेक्ट प्लेइंग 11 फॉर टुडेज मैच, और वर यू एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस कि शायद स्लो पिच है तो अश्विन आ सकती है, या थोड़ा स्पिन अटैक हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कनब, मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन अनचेंज्ड प्लेइंग 11, और वही यहाँ पे सामने आया है. रोहित शर्मा ने जो डिसाइड किया वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि रेड सॉइल पे ये मैच खेला जाएगा. रेड सॉइल पे लाइट पैचेस भी हैं ऑफ ग्रास ऑन द पिच, जिससे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको जाहिर बात है कि मदद मिलेगी. और स्पेशली जसप्रीत बुमराह की बात करें, अभी तक पावर प्ले में जो उनकी इकॉनमी है दैट इज़ अराउंड 2.30 और 2.50. तो ये एक बड़ा कॉन्टेस्ट होगा इंग्लैंड के बैटर्स के लिए, उनके टॉप ऑर्डर के लिए, जो पहले से ही फॉर्म में नहीं है. और बुमराह के अगेंस्ट वो कैसे खेलेंगे और कैसे खुद को बचा के आगे निकालेंगे, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह काफ़ी लिथल परफॉर्मेंस अभी तक दे रहे हैं वर्ल्ड कप में. इसके अलावा बात रही मोहम्मद शमी की, तो जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में फाइफर लिया, उसके बाद वो काफ़ी डेंजरस हो चुके हैं और इंग्लैंड को उनसे सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा. वहीं एक और प्लेयर जो अभी तक बहुत ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है ना, वो है रविंद्र जडेजा. और रविंद्र जडेजा के अगर रिकॉर्ड को आप देखें, स्पेशली अगेंस्ट बेयरस्टो, तो वो काफ़ी डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं. लगभग पिछले 8 मैचेस में 5 बार उन्होंने बेयरस्टो को आउट किया है. तो सब मिला के यही लगता है कि इंग्लैंड के लिए ये आसान नहीं होने वाला. एक और हार मिल सकती है, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि लखनऊ में फिर से टीम इंडिया लगान वसूलेगी. बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ रहे हैं साहिल मल्होत्रा. साहिल, सबसे पहले तो आपको देखकर पता चल रहा है कितनी गर्मी है, पीछे धूप इतनी है, जिस तरीके से सूरज निकला हुआ है. सबसे पहले तो बताइए कि वेदर कैसा है, कितनी गर्मी है, आपने वार्म अप करते देखा प्लेयर्स को, कैसा था प्लेयर्स का वार्म अप? वाज हीट अ बिग फैक्टर व्हाइल दे वर वार्मिंग अप? वो टॉयल उनकी बॉडी पे दिख रहा था? व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल दैट? No, again, Kanav, yes, it's very hot in Lucknow, and it has been, this hot since the last couple of days. And the players were gently warming up. The warm-ups haven't been that intense. And there's only one Maverick who still takes laps of the stadium, and that's Virat Kohli. पता है क्या इतनी गर्मी में उसको दौड़ लगाना था वो आज. He was still running around the stadium, started bowling, but again, gentle warm-ups for the entire team. The mood is good. The spectators are slowly filling up because again, this stadium is also not conveniently located, unlike the older centers. So it takes some doing to get here, and there are long queues still outside the stadium. But it is expected to be like a full house pretty soon. बिल्कुल बिल्कुल साहिल, सेम टीम एज द लास्ट मैच, इंडिया इज प्लेइंग द सेम टीम, कोई चेंजेस नहीं है. आई वाज रीडिंग योर ट्वीट्स, अश्विन भी थे जो जडेजा के साथ वार्म अप कर रहे थे, वो भी पिच को ध्यान से देख रहे थे. तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग 11? क्या कोई पिच कैसी है? पिच पे कहा जा रहा है कि देयर वर एक्सपेक्टेशंस कि बॉल स्पिन होगी, लेकिन द इंडिया इज गोइंग विद द सेम अटैक, थ्री पेस अटैक. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think it's a brilliant team. There's no need to include a third spinner because when Hardik is not playing, you just can't go in with two seamers in this heat. आज इंडिया बैटिंग कर रही है, अगर हम बॉलिंग कर रहे होते आप दो सीमर्स को रोटेट कैसे करते? यू कांट बोल योर बॉलर्स हियर फॉर मोर देन 3 over 4 over spell. So I think this was the best 11 going forward, and I have been saying this in the last couple of days. Like Ashwin is only going to play if the track is an out and out rank turner or a dust bowl or close to that, like we saw in Chennai. उसके अलावा अगर कहीं पे अश्विन was close to play, I think that was in Ahmedabad because the surface was slightly on the slower side. उसके अलावा you won't see him play. I think this management has made it clear that they are going to go in with those three seamers, and Shami, in absence of Hardik Pandya, has kind of done a phenomenal job in the last game, picking up a fifer on return. So there is no way you can drop him too. And Siraj again, he's a very good bowler and continues to bowl well in different phases of the game and gives you control in those middle overs. Something which Shami hasn't been able to do in the past, but looked very well in that game against New Zealand in Dharamshala.
But again, to play Ashwin, I think you can only play Ashwin अगर हार्दिक वापस आता है, आपको थोड़ा और बैलेंस मिलता है, वरना 3 स्पिनर्स और 2 सीमर्स बहुत रिस्की मूव होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और साहिल 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि विराट कोहली हैज बीन कॉन्टिन्यूसली बॉलिंग इन द वार्म अप। वो रोहित शर्मा को भी उन्होंने नेट्स में बॉलिंग करी, शुभमन गिल को भी उन्होंने नेट्स में बॉलिंग करी, आज भी वो वार्म अप में बॉलिंग करते दिखाई दिए। तो आपको लगता है वो जो एक ओवर उन्होंने हार्दिक पांड्या कंप्लीट किया था, आज उससे ज्यादा कुछ ओवर करते हुए विराट कोहली आपको दिखेंगे मैच में? आई होप ना जरूरत पड़े, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा अलग ही है यार। 2-3 दिन से द वे ही हैज बीन बॉलिंग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रन अप, मतलब ऑल फन इंटेंडेड। क्या रन अप है, क्या एक्शन है, मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है विराट कोहली को बॉल डालते हुए देख के। बट यस, ही हैज बीन बॉलिंग अ लॉट। फर्स्ट डे इन in Lucknow he bowled, and today also, like right after completing his warm up, before actually doing some batting drills, he was actually bowling out there. बट सोशल मीडिया की खबरों में मत जाओ यार। सोशल मीडिया ने तो सुबह बोल दिया था रोहित ये मैच नहीं खेल रहा, तो सोशल मीडिया को छोड़ दो, वहां पे कुछ भी चल रहा है सुबह से। एंड साहिल, व्हाट अबाउट द क्राउड टर्नआउट? आपने कहा कि थोड़ा इनकन्वीनियंट लोकेशन पे है स्टेडियम, थोड़ा बाहर है, अभी तक क्राउड का कितना टर्नआउट है, कितनी भीड़ है? व्हाट्स द वाइब अराउंड द स्टेडियम? See, right around the stadium, there's a mall right opposite the stadium. So they have like kind of blocked all those roads leading to stadium because UP Chief Minister Yogi Adityanath is expected to be here today. तो अगर उन्होंने आना है तो सिक्योरिटी बाहर टाइट कर दिया गया है। सो ऑल लेन्स एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत लंबा यू टर्न है। आई रीच द स्टेडियम एट 10:30 in the morning, but I had to take a long detour before actually getting here. So you just can't take the highway and get down, which is like your usual route. So you have to like go around the stadium. और जो parking spots भी हैं, those also are like a kilometer away from the stadium. So वो टाइम लगेगा, बट लोग आ रहे हैं। अभी भी मैं अपने सामने देख रहा हूँ तो लगातार देयर इज अ सी ऑफ ब्लू which is like coming into the stadium. अभी it's not that filled right now, बट 1 घंटा मैक्सिमम दो यार, यहाँ पे वही पुणे वाला हाल होने वाला है। पुणे में हमें लग रहा था हाईवे पे लोग कैसे पहुंचेंगे, ये तो फिर थोड़ा शहर के करीब है। सो यहाँ पे टर्न आउट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और सुबह आई वाज देयर एट दैट फेमस शर्मा टी स्टॉल which is like 5 minutes away from where I was staying, the iconic शर्मा टी स्टॉल। तो वहां पे मतलब इतना इंडियन जर्सी में सुबह 10:30 बजे देख लिया। So there's no doubt and no question whether it's going to be a packed house or not. परफेक्ट परफेक्ट। सुबह की चाय के बाद सीधा मैच देखने का मजा ही कुछ और है। श्रीनिवास, वी कम टू यू। इंग्लैंड की थोड़ी बात करेंगे यार। इंग्लैंड हैज बीन इन a horrible form, if you can say. They have only won one match. और कल I was watching a discussion between Nasir Hussain, Owen Morgan and Michael Atherton, and they were discussing what's wrong with England. They had to take that इंग्लैंड पिछले कुछ सालों में, 1.5-2 सालों में, दे आर फोकसिंग टू मच ऑन टेस्ट क्रिकेट, जिससे ओडीआई क्रिकेट उनका थोड़ा पीछे आ गया है। सिमिलरली जब टेस्ट क्रिकेट जब उन्होंने ओडीआई पे फोकस किया था 2016-17 में, देन टेस्ट क्रिकेट जो रूट की जो टीम थी, इट सफर्ड। तो दे हैड दिस आइडिया दैट since England ECB is focusing more on that baseball, Ben Stokes, McCallum test revamp, ODI cricket थोड़ा पीछे आ चुका है, and they have not played much ODI cricket in the last 1.5 or 2 years. What's your take on this? You're on mute. Sorry, can you hear me? Yeah. हर तरफ से तुमने फायरिंग कर दी। अभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ से पहले जवाब दूँ। Number one, the first thing that occurs to my mind when I'm looking at England right now is what kind of a personal insult they've taken this as. Coming into the tournament, they were seen as favorites, right? I mean, what was the conversation around this England team? Boss, the fact that these guys can bat until number 10 is giving us a nightmare, right? So from there to where they are hanging in the points table as of now, last, it's humiliation. It's utter humiliation. Forget, forget what anybody else is saying. I was listening to Ian Morgan's quote, where he talked about this England team, kind of good for nothing, almost something not in verbatim, but something very harsh that he said, and that kind of a statement should be stinging this team. So, what kind of an insult are these guys, ready to accept? That is the question this England team needs to ask itself. That said, वनडे क्रिकेट कौन कितना खेल रहा है? टेल मी विच टीम इज प्लेयर. सी, यू टॉक्ड अबाउट इंग्लैंड्स fascination about England test cricket and all. I mean, be it any weather, be it any opposition, be it any country, be it any time of the year, be whatever the national calamity, they are always talking test cricket, right?
I mean, here, the other day, I remember Sahil Malhotra, our correspondent, was telling me about a press conference that he attended of Michael Trescothick, the coach, who has already given up from this World Cup and has moved on already. He's talking about England's tour of India, which is going to happen next year. He was actually talking about it in the press conference. But that's England. They are never in the moment. Back in England, when there is some white ball tournament happening, you ask them, the question will be either about the Ashes that just happened or the Ashes that is going to happen. So they are never in the moment. For them, it's all about this Ashes fascination, Test cricket, which is all fine. Right now, the question is, what kind of an embarrassment or humiliation are they willing to accept, and then build on it? It has to pinch you, right? It has to make you feel bad. It has to make you feel lousy. The fact that you are 10th in a table that has Netherlands, Afghanistan, and of course some of the other teams which are not doing really well. So in a table like that, if you are number 10, then if it's not hurting you, then something is wrong. Does this team have the potential? We all know it does. We all know it. This team has the potential. It's just very, very low on any kind of self confidence right now. I've seen some random quote somewhere. Baseball doing hello. Baseball has nothing to do with this. Please don't confuse. Baseball. Half the people, I don't think understand. Brendan McCullum is not even in charge of this team. He has nothing to do with the white ball team. So I'm saying that, half the narrative around England is obviously kind of wrong where it is coming from, and half of that is what to do with what their current mindset is. I think with those couple of shock defeats, they've already gone into a defeated mindset. Can they pull themselves out of there? Barring one-off victory which can upset the apple cart for some other team, barring that, I don't think they can do anything spectacular now in this tournament. I don't see them coming up with a 4-match, 5-match winning streak, given the low confidence that they are in. But ye na ho jaye ki in trying to recover from where they are, they pull off an upset at a time, and where it might hurt some other people. So from Yeah, that perspective, like for India, I mean, we all hope that yeah. India continues its winning streak. And Shini, ECB releasing the contract in the middle of a World Cup. You are releasing a contract just with one player, two player, three player. How right was that? Because even उसमें Roy भी एक को Morgan, दिया नहीं ना. Michael Willie, David Willie. क्या मतलब है? I don't know why do you have to hey guys, have a good World Cup, but listen, you don't belong to us from a futuristic perspective. Okay, yeah, carry on, play the World Cup. I mean, what nonsense. Who does something like this? Yeah, I really can't find any. I mean, all you had to do is wait for another 5 days. This team is already on its way out. So Yeah. why rub salt like that? I thought that was a very, very poor move from ECB. But this looks like a season of faux pas from cricket boards. Yeah. So, well, less said the better. ECB, PCB, all even Pakistan Cricket Board is making the same blunders. Taos, will come to you. Talking about the England cricket team, Shini said, "What's wrong with the team?" What's your take on the team? क्योंकि India or England were the favorites. जितने भी experts ने predict किया था, England was the first team along with India जो semi-finals की prediction में आ रही थी. What went wrong for England? Is it the low confidence एक दो मैच हारने के बाद, or is it the team combination they are not able to click, or the captain Josh Butler not being in form? What's your take on that? I think they have fallen like 9 pins यहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है and thanks to their form as well. I mean हम सब के लिए हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे I think सब के लिए एक टॉप 4 में तो इंग्लैंड थी. मेरे लिए तो पक्का थी that they would be there in the top 4 or could be the final, could be one of the finalists. But this is surprising. This is surprising because they still have a very good batting lineup. Maybe it's because of the wickets that they were surprised. ICC में you see batting wickets yeah mostly where the wicket favors batsmen. बट यहाँ पर सडनली स्लो विकेट सडनली एक कुछ अलग आ गई विकेट जो उनको सरप्राइज करते हुए जा रहे हैं. दे आर नॉट यूज्ड टू इट. मे बी आईपीएल में इफ यू सी आईपीएल में विकेट्स आर वेरी वेरी बैटिंग फ्रेंडली. दे एंजॉय. जॉस बटलर एंजॉय हिज बैटिंग इन जयपुर और मे बी बेन स्टोक्स ज्यादा आईपीएल देखने नहीं मिला. बट देन मोइन अली चेन्नई में रहने के बाद आई मीन ही विकेट्स पूरा अलग होती है आईपीएल में. दिस इज समथिंग डिफरेंट. बट श्रीनी भाई आई हैव अ क्वेश्चन भैया. मुझे एक थोड़ा कंफ्यूजन. वर्ल्ड बैलेंस खराब हो रहा है ओडीआई को लेकर. आई मीन आर वी फोकस्ड ऑन ओडीआई व्हाट इज क्योंकि आपका T20 फॉर्मेट है.
आपका टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट है, ओडीआई में 10 लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई मीन पीपल आर कंफ्यूज्ड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ओडीआई, आई मीन क्योंकि बैलेंस आप देखिए, कभी इनका नई टीम्स आ रही है, दे आर वेरी मच कीन टू कम आउट एंड परफॉर्म, नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान, बट देन ODIs for top teams, they are playing lesser number of ODIs, they are playing more T20 cricket, and the focus for India as well, Test cricket and T20s, ODIs तीसरे नंबर पे आता है. But what is the future? Vision क्या है हमारा? आईसीसी को मुझे लगता है स्पेसिफाई करना पड़ेगा. Are we serious about ODI cricket? नहीं तो मुझे लगता नहीं है. ODI England are very very serious. They are as you said, Test cricket, Ashes, T20 cricket आ गया उनका, बिग बैश, ये वो 10 लीग्स आ गए यहाँ पर. What is the vision? Clarity है कुछ वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कि बड़ा ओडीआई सिंपल क्रिकेट है, किस तरफ जा रहा है? बड़ा सिंपल है. योर सन प्लेज क्रिकेट विथ यू, माय सन प्लेज क्रिकेट, राइट? मैं उसको क्लब में डाला हूँ. वी ऑल हैव यंगस्टर्स अराउंड अस जो प्लेइंग. You, when we talk to them, okay, what amount of different formats, different rules, different versions of the game are we expecting them to digest? How much of हमारे समझ में नहीं आता है कि yesterday, in that day before, in that match against Pakistan, in that whole soft umpires call का जो debate हुआ, half the people who were coming to me did not understand why exactly does a decision come back to the umpire. It is becoming such a complicated game. I'll tell you, some of the people, I tweeted that, why not keep it simple? Umpire's call, once the decision has been referred to the third umpire, there's no point bringing it back. Just resolve it there. People are coming up with scientific theories. There is a lot of, I'm not saying they're wrong. They're absolutely right. There is technology is heading places and we need to respect that. But उतना वो बच्चा थोड़ा और पढ़ाई कर लेना उसको समझने के लिए, तो वो क्रिकेट के लिए खेलने के लिए टाइम ही ना बचे उसके पास. What are you doing? At the end of the day, it's a sport, and anything that you are doing at the top level, does it even filter down to cricket that is happening at the domestic level? For a youngster, I'm telling you something as simple as DRS. For a cricketer to actually understand DRS, he has to start playing the IPL or has to start playing cricket at the highest level, international level. Otherwise, where is the question of DRS? So where is he going to spend time understanding the nuances of a modern day sport? When you have so many different formats, so many different rules, so many different jargons, and so many different intellects, kind of meddling with the game. And as if all of this is not enough, we were talking about England, and you were talking about England and one day cricket at a time when they are now busy with 100. They bring an altogether different format. So where exactly, it's like, I am floating a new business proposition. Mind you, and I'm telling you this has nothing to do with cricket. Cricket as we know it is not this. This is business, what you're watching. Cricket, and we can keep this for another day. It's a longer debate. Yeah. We should stick to the India-England We- preview. But I'm just saying that this is the cricket नहीं है, बस ये धंधा चल रहा है. Yeah, we'll So be stick it. to, for now we'll stick to India versus Yeah, England. yeah. बिल्कुल ये बहुत बड़ी डिबेट है. साहिल, coming to you, I know आपको भी अंदर जाना है. एक आखिरी क्वेश्चन before we let you go. जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, I was in the वानखेड़े स्टेडियम and I saw इंग्लैंड warming up and a practice session a day before, और उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लो थी. They were looking visibly dejected. तो आप 2 दिन से लखनऊ में you are watching England warming up and practicing in the next session. तो इंग्लैंड का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा है पिछले 2 दिन में? Does it show that they are down and out, or are they like usual, they are practicing पूरे फॉर्म में? आपको क्या लगा? What did you see? Pranav, I wrote a piece yesterday and I still very clearly remember the intro because I really liked writing that intro. England are mathematically alive, physically present, but mentally they have checked out of the World Cup. And that has been the case in the last 2 days. Last 2 days, the body language has been very flat. I think net sessions have been just ki bas yaar, just tick the boxes. They're counting days to get back on that flight to England now. They don't seem interested. Ben Stokes is bowling in the nets. Harry Brook ko wo ball dal raha hai. No one has clarity whether Harry Brook, what will happen with Harry Brook. Josh Butler ka we ask whether there's a thought to kind of send him up the order because he hasn't been batting well in the middle order. No clarity, nothing out of the box. And I think what this England side is lacking is that leadership which we saw from Ian Morgan when they kind of had that white ball revolution of sorts. So वो जो leadership था ना, वो somewhere is missing.
someone like a Brendan McCullum, look what he did with the test setup. Someone like a Ian Morgan, look what he did with the white ball setup. Right now, this team appears very clueless. They were thinking कि हम आएंगे, batting depth लाएंगे, bowling depth लाएंगे, and the results will fall in our place. But वैसा नहीं होने वाला, because all teams are here to compete and they have figured out a plan for England. Because England right now don't seem to have that one-day game, because one day just can't be about mindless slogging. Even if South Africa are scoring 400 runs, there's a Quinton de Kock up the order who can give you 30-35 overs ka start. You have David Miller who can change gears with perfection. You have Aiden Markram who can play to the situation. So आप वो सारी teams को देखो, and you compare those players with England players. I think apart from Joe Root, वो changing gear वाला जो concept है, या David Malan for that matter, बेयरस्टो बटलर का एक ही गेम है बॉस, पूरा आईपीएल देख लो. और लास्ट आईपीएल का अगर आप सेकंड हाफ याद करोगे तो उसके अंदर बटलर वाज फिगर्ड आउट, like the incoming deliveries and keeping him quiet in the power play overs, that kind of led to his downfall even in the IPL too. And Taus rightly, and it's baffling that you're not playing Moeen Ali. Moeen Ali CSK में धोनी उसको 3 नंबर खिला रहा है, यहाँ पे मोइन अली को गेम टाइम नहीं मिल रहा है. So Moeen Ali is an asset, yaar. How can you not have Moeen Ali, batting in the top 4, top 5 position, bowling those many overs, because he's a brilliant off spinner. No question asked. He's a brilliant off spinner. You need him there. He can bowl, power play में डाल सकता है. He can bowl with the older ball towards the end, has good control, and more important than that, he's a street smart cricketer. You recalled him for the Ashes. You gave him a message और बोला कि Ashes खेलो आगे. और यहाँ जो फॉर्मेट और जो बॉल का रंग से उसने डोमिनेट करा, आप वहीं उसको उतना चांस नहीं दोगे. So there is definitely something wrong, within the camp mindset को लेके. And Morgan did say, I was reading that statement. He said something unsettling is there in this England camp, because they are not the England which we know. 2019 50 over World Cup, 2022 T20 World Cup, वो invincibility वाला air नहीं दिखा मेरे को 2 दिन में. Absolutely. And what's the situation Dew के मामले में? Sahil, you have been there for 2 days. Dew का क्या? Will it be a big factor in this match going ahead? देखो रात को ठंड तो पड़ रहा है. So heat के बाद when the cooler waves start coming in, dew starts to form. कल भी there were certain areas where we could spot dew, और थोड़ा घास के ऊपर नमी था, और ये weather भी वैसा है बॉस. We are like almost November. North Indian winter chill is already gripping us now. So there is going to be a bit of a role, but ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम तौलिया लेकर एकदम बॉल पहुंचते रह जाओगे. And our bowling attack, Kuldeep was waiting for this opportunity. He told us at a mix zone session in Ahmedabad that मैं तो रोहित भाई को बोलता हूँ मैं second inning में अच्छा बॉल डालता हूँ, but वो मेरी सुनते नहीं है. So Rohit was fielding first in all 5 games, had to field first in all 5 games. But I think today it could be a good opportunity for Kuldeep, क्योंकि वो extra zip जो मिलेगा ना surface से under lights, वो उसको help करेगा, extra yard or 2 in his bowling. बिल्कुल perfect. Thank you so much, Sahil bhai. We'll let you. I know match start हो चुका है. You will have to go inside. Thank you so much for connecting with us and providing some great inputs about the team, both the teams. Thank you so much. We'll come to मुझे एक चीज ऐड करना है. देखिए मुझे एक चीज ऐड करना है इसमें. मैंने आई वाज जस्ट रीडिंग द कोट ऑफ जॉर्ज बटलर. वहां पर उनको पूछा कि भाई आपने फील्डिंग क्यों ली, आपने क्या प्लान क्या था, तो वहां पर लिखा है मैं गट्स के ऊपर गया. तो आपकी प्लानिंग समझ गए यहाँ पर. प्लान बिल्कुल भी सोच समझ के, स्ट्रैटेजी कुछ है कुछ नहीं है. दे हैव ऑलरेडी गिवन अप राइट नाउ. देखिए सामने आपको दिख रहा है. इट्स अ गट डिसीजन. आई मीन इज दिस हाउ यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट? इट्स अ गट डिसीजन. आई मीन ये यहाँ पर बाबर आजम की तरह जॉर्ज बटलर मुझे नजर आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. And this is that was exactly what Morgan said in that Sky Cricket interview that I was talking about. He said that टॉस पे डिसीजन इतने वियर्ड लिए जा रहे हैं बटलर की तरफ से. इट लुक्स लाइक जो पिछले मैचेस है वो डिसीजन इंपैक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द कंडीशंस. वो ना कंडीशन देख रहे हैं, वो ना स्ट्रेंथ देख रहे हैं अपनी टीम की. वो ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ मैचेस में क्या हुआ है, क्या हम कर लेंगे. तो वो डर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. तो एज यू सेड it can backfire badly. रंजीत, कमिंग टू द इंडियन टीम, इंडिया कर रही है पहले बैटिंग इस बार, और दे हैव बीन सेइंग कि विराट कोहली की वो 49th ओडीआई सेंचुरी का सबको वेट है, कब वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल करा जाएगा. आज तो कोई छोटा टोटल भी चेंज नहीं हो रहा कि विराट कोहली को वो टाइमिंग करनी पड़े. 5 रन चाहिए जीतने के लिए, 5 रन चाहिए सेंचुरी के लिए. आज उनके पास पूरे 50 ओवर है. होपफुली ओपनर्स अच्छा खेलेंगे, फिर विराट आएंगे. व्हाट डू यू थिंक? आज क्या विराट, डू यू सी विराट स्कोरिंग अ गुड 49th ODI century and equaling his idol's record today? Yeah, Kanav, in fact everyone wants to see him scoring 49th 100 and इक्वल कर ले वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को. लेकिन क्या चेस मास्टर का रोल नहीं होगा इस बार? वो मास्टर को चेस करेंगे. इसके बारे में एक और स्टैट है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगा.
इंग्लैंड ऐसी सिर्फ मतलब इंग्लैंड इज द ओनली टीम जिसके अगेंस्ट विराट कोहली का एवरेज जो है बैटिंग एवरेज दैट इज बिलो 50. हाँ, आफ्टर प्लेइंग मोर देन वन गेम, ओनली टीम इंग्लैंड जिसके अगेंस्ट विराट कोहली ने 50 से कम के औसत से रन बनाए हैं. तो ये बताता है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं शायद विराट कोहली. अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो 49th सेंचुरी लगा के विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के साथ बराबरी पे खड़े हो जाए. उनके पास मौका भी भरपूर होगा क्योंकि इंडिया पहले बैट कर रहा है. तो लेट्स सी, शायद ऐसा देखने को मिले. एक और जश्न का माहौल होगा अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं तो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट एवरी फैन वांट्स. एक आखिरी सवाल सबसे विल स्टार्ट विद शिनी. शिनी, व्हाट्स द पार स्कोर? व्हाट डू यू थिंक इज द टोटल दैट इंडिया विल बी कंफर्टेबल विद, कि ये टोटल इज इनफ टू डिफेंड अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड जो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही? व्हाट्स दैट नंबर इन योर माइंड? So I mean, you need to cross 330, 340. वो 300 plus जाके तुमको you have to go past 330. Beyond that, फिर whatever you put on board is like, you know, kind of keeps adding on. But for 330 minimum, you have to put that kind of score on board. And given this England batting lineup, I mean, low on confidence, but potentially what they can do, yeah, 330, 350 is the score you need to put on board. Taus, what's the number in your mind? यार, as Rohit Sharma said, this is a newly laid wicket, relayed wicket. तो मुझे लगता है कि यार इतना ग्रीड आ गया है, हैविंग वॉच्ड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे एंड न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट चेजिंग दैट स्कोर. तो ऑन पार स्कोर होना चाहिए यहाँ पर. एटलीस्ट रेड सॉइल है, बैटिंग करने में मजा आएगा. तो आई थिंक 350 के ऊपर 380 तक तो जाओ यार. आई मीन एटलीस्ट कुछ जो बैटिंग देखने को मजा आएगा. आई मीन वी हैव अ पावर हाउस यार, वी आर अ बैटिंग पावर हाउस, सो वी शुड शो लाइक दैट. सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर करके बोर हो गया हूं मैं देखकर यार. आई वांट टू सी अ गुड बैटिंग फ्रॉम टीम इंडिया. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. पहला ओवर मेडन हो गया, हम बता दें इंडिया का पहला ओवर मेडन गया है. अब दूसरा ओवर हो क्रिक स्मोक सकता डालना है है. 380 आराम से जाएंगे तो भी. यू हैव इनफ टाइम यार, 50 ओवर्स. Ranjit ji, do you see England winning this match? Is there any chance England might upset? I don't know if I should use the word, if England might upset and beat India today. I think if Team India scores anything around or above 300, then it will be good enough to defend the score. Considering the bowling lineup of Team India right now, very lethal attack in Jasprit Bumrah and Mohammad Shami, then Ravindra Jadeja, of course, he is too good against England as of now. So I guess there is no chance for England winning this match. जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, कंसिडरिंग दैट परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के लिए कोई चांस होना चाहिए. बट इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी, तो देखते हैं. Absolutely, absolutely perfect. मैच शुरू हो चुका है. होप यू ऑल विल वॉच द मैच, एंजॉय द मैच. एक हफ्ते बाद आया इंडिया का मैच. विराट कोहली फैंस, इंडियन फैंस वांट हिम टू स्कोर अ 49th ODI century. Thank you so much, Shrini. Thank you so much, Sandeep. Thank you so much, Taus, for connecting with us and giving your amazing input. And thank you so much to all our viewers. Please watch the match. Join us at the mid innings and the post match show. Until then, take care and enjoy the match. Thank you so much.